Welcome to this self-transformation series. You are most welcome on our channel. And if you are someone who has not subscribed to the channel, I would request you to subscribe and press the bell icon so that you get notification as when I am uploading new videos. So friends, today on our show, I have a very special guest. He has gone through the self-transformation journey with me recently and seen the results. So without much ado, let me welcome Mr. Nikhil on the show. Hi, Nikhil. Welcome to the show. And it's pleasure to have you here. Hi, hello sir. Hello, how are you? Good, good, good. As you are aware of the format, in this particular episode, we are going to discuss about your journey of transformation as you went through this coaching process. And we, through your journey, we would like to inspire people so that they know how you got your breakthroughs, how you got your transformation. And essentially, the purpose is to break that code which most people carry in their head that change is not possible or transformation don't happen, right? So to begin with, let's start with your introduction and a brief background of yours. My name is Nikhil Sharma. I'm an MBA in finance. I've been working for the last 11 years in food industry, and it was okay till I met Lalit sir. I was not very clear about my goals, about how to achieve my dreams. I was a bit confused. I have been following Lalit sir for the quite long time. I have been going through his journals, through his videos and all. I was not sure whether I should take this or whether this will help me or not. Till the day I booked a one-to-one session with Lalit sir. The day I booked my session was the day I realized that I am the one who requires this program than anyone else. The program helped me so much. It gave me a clear path, a clear thought, a way of a process. It was incredible. As the program says, it's incredible. I'm very, very blessed, very lucky to have a coach like Lalit. And again, want to thank you so much. I wanted the journey to continue forever. It was such a beautiful journey, and the best thing about the journey was it always kept me surprising. I always started thinking, "Ki, okay, this is a new thing for me. Now what's next?" But each and every time you got me surprised with your new techniques, with your proven scientific method, which was very practical. The best thing about the whole course was that it was practical. It was not based on speech therapy and all. It was totally practical and scientifically proven. Thank you, Nikhil. So I can understand the kind of experience which you had, and that is very much visible in your face and words. So fantastic. So friends, this is the first time Nikhil is coming for such an interaction. So just to give a brief background around him, so Nikhil is based out of Delhi. He is working in a logistics firm currently as a senior manager, right, Nikhil? Hmm. Yeah, and Manager operations and logistics. yes, manager operations and logistics. He is married. He has one beautiful wife and a son. That's about it. I think when he met me, he was going through a certain particular phase. Let's hear it out from him. So, Nikhil, when you reached out to me or before we had a one-to-one session, if I had to ask you, what was your happiness level? How much you would have rated yourself at that point of? I was average, above five, or in between 5 and 6. Okay, so on a scale of 1 to 10, so 1 is the lowest, 10 is the highest. So 5 and 6, that is how much you would have rated Not yourself. 5 and 6. Yeah. Not about that. So as of now, and when we are talking now, since you have completed the journey some time back and seen some of the results, so how much you would rate yourself at this point of time? I would say above 8. Above 8. So The yeah, remaining points are up to me. That yes, how should I achieve it? absolutely. So from even a progress from a 5 or 6 to 8 kind of a thing within a period of 3 months. So I think that's a good progress. That is how I look at it, right? Absolutely. So, Nikhil, if I have to ask you, what was the reason which prompted you to avail the services of a coach or maybe go through a coaching program? What was it that was troubling you? See, everybody has their own goals, they have dreams, but the problem with most of the persons are they are not sure, they don't know the process to achieve it. I was struggling, I was really struggling. I couldn't find a way to achieve my goals. I have my own goals, as I told you. Yeah, I want to achieve this. I want to be in a top company position, but I don't know the process. Hmm, There were many obstacles who were stopping me. Like I don't have the time slot for that work. hmm, Fear of job. right.
financial security. There were many hurdles which were stopping me. Hmm. So I never gave a thought, never gave a try to achieve that goal. But since I was lucky to have you as my coach, you guided me. So I have a clear mind. So I feel everybody needs a coach. If you ask me, you need someone to show you a right direction, and it was you who showed me the right direction. Right. That's right. So if I summarize what you said, you wanted to achieve Mhm. something in life, but you lacked clarity on what is it that you want to achieve, and somewhere you were not aware about how to go about it. Is that what you were trying to say? There Okay. were many things, two, three things popping up in my mind. I was not sure whether to go for this, whether to go for that. I don't have even have the target setting. Should I achieve this first? Then I go for the second one. Then I go to. I was working on everything at the same time, and I Hmm. was not achieving anything first Hmm. because it was a total mess. So what I understand, you wanted to achieve many things. That is one what I hear you saying. Second is prioritization. You didn't know which you should be, going ahead with first, what you should be following up second. That was missing. Third is how to go about this journey was missing. So that there was a lack of clarity on all the 2 3 points. So how to prioritize, which one to prioritize, and even if you are able to prioritize, how to go about achieving them in a systematic manner so that you are actually able to achieve those things. That is what you are telling me, right? Why do you think you were going through in a situation? So before joining this program, what was that one particular thing which was stopping you? So you had lack of clarity. Was there anything else which was stopping you from achieving things? Fear of job change, Okay. financial security, Okay. focus, and most importantly, dedication. The Okay. dedication which was required, I was very much distracted. Right. I wanted to do that, but I was never clear in my thoughts. My Hmm. mind was always struggling, Hmm. so I was not able to focus on that. The Okay. main reason which I was struggling, I was never sure whether I should go for this, whether I should go. I had many options popping up. This was the main problem with me. Okay. So निखिल, अब मुझे समझ में आया कि आप काफी कुछ अचीव करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं था, बट आप फिर भी जॉब कर रहे थे, सैलरी आ रहा था, लाइफ वाज गोइंग ऑन। तो वो सारी चीजों के अचीवमेंट से ना होने से लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा था? हाउ वाज इट इम्पैक्टिंग योर लाइफ? I was not satisfied. मैं खुश नहीं था मैं, but it was just the going off with the flow. हम्म। स्ट्रेस में था, आई वाज नॉट हैप्पी, एंड इससे क्या हो रहा था कि आई वाज स्ट्रगलिंग इन प्रोफेशनल लाइफ, तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ भी अफेक्टेड होने लगी। मतलब आई वाज ऑलवेज इन एवरेज स्टेट ऑफ बिलो एवरेज स्टेट ऑफ मूड, नॉट वेरी हैप्पी। Working in office was a challenge for me. Going to work was like something I don't want to go, but I had to go. So it was not good for me. I would say कि negative. ओके। In short, it was negative. सो इसेंशियली इफ आई लुक एट इट कि बिकॉज आप करियर में कुछ अचीव करना चाह रहे थे जो नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से दिक्कत आपको ये हो रही थी कि काम पे जाने का मन नहीं कर रहा था, यू आर फीलिंग लो, एवरी डे यू डिडंट वांट टू गो टू योर जॉब, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी विद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कमिंग इन। तो कहीं ना कहीं मतलब इट वाज ऑल इन अ मेस। अगर उसको सिंपली वर्ड्स में बोले तो इट एवरीथिंग वाज इन अ मेस। नो वंडर एज यू स्टेटेड कि बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस 5 was the score which you gave to yourself on an overall happiness scale. All right. So this was before you started with the journey. Now, how did coaching or this particular program helped you in overcoming these challenges? What you stated, focus, clarity, discipline, and all those things, consistency. कैसे overcome करने में help किया आपको coaching? यू सी, सबसे इम्पोर्टेंटली चीज जो मेरे को रियलाइज हुई इस कोर्स से वो ये है कि आई एम द ओनली वन हु इज स्टॉपिंग माई। Okay. मैंने, हाँ, तो मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन था जो मेरे को प्रोसेस में हुआ कि नोबडी इज स्टॉपिंग मी, देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स। जो मैंने एक फ्रेम बना रखा था कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज, बट एक्चुअली नथिंग इज अ प्रॉब्लम अनलेस यू क्रिएट इट। द बेस्ट थिंग वाज दैट मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया। आई ऑलवेज यूज टू अंडर वैल्यू माई सेल्फ, बट
This program helped me realizing my real value, that I can do anything, I can achieve this. This was the best thing. And जो excuses मैं देता था for not achieving my goals, I don't have time, I cannot take risks, these are just excuses. Uh, excuses are bad for you, which I realized कि आप अपने प्रोसेस को डिले कर रहे हो, यू आर ओनली डिलेइंग योर प्रोसेस ऑफ सक्सेस, जो मैंने रियलाइज किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एक्टिवली, वेरी एक्टिवली, लाइक जैसे आपने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया, द बेस्ट थिंग अबाउट यू, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो। जैसे मैंने एक्सक्यूज किया था कि आई वर्क फ्रॉम 8 to 8, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है, तो आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको डिफाइन करके मेरे को ये रियलाइज कराया कि इफ आई वांटेड टू डू इट, आई कैन इजीली स्पेयर 2 hours a day, और वीकेंड पे मैं 4 घंटे 6 घंटे दे सकता हूँ। तो आपने इनफैक्ट मेरे लिए वो टाइम टेबल भी सेट किया था कि यू कैन अचीव इट फ्रॉम दिस, आप लेट नाइट बैठो, आप अर्ली मॉर्निंग बैठो, जिस टाइम पे माइंड सबसे ज्यादा, इट रियली हेल्प मी, मतलब इट वाज एक्चुअली अ बेस्ट थिंग टू डू, जिसको करके मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस वाज जस्ट एक्सक्यूजेस, जो बहुत इजीली ओवरकम किया जा सकता है। बहुत मतलब बहुत क्लैरिटी है माइंड का। मैं अपने सबसे ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन जो मैंने इस कोर्स से किया, and इतना अच्छा कॉन्फिडेंस और इतना क्लैरिटी पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आई वुड से कि 20-30% भी नहीं था, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज नॉट इवन 20%। आई Mhm. ऑलवेज यूज्ड टू से चलना चलने दो, मे बी वर्स कैन हैपन, दिस वर्स कैन हैपन के चक्कर में मैं ऑलरेडी वर्सन कर रहा था। तो Right. तब में और अब में देखें तो आई एम इनटू द क्लाउड्स। Fantastic, fantastic, awesome, and that is visible on your speech. In fact, I remember talking to you when we met for the one-to-one session, or us time pe, the kind of discussion which we had. So I can relate to it. So just to summarize, what I understand is कि before going through this journey, for your non-achievement, you were more, blaming the external factors. कि maybe external environment supportive नहीं है, and there are not many opportunities. Workplace पे भी people are not good. हर किसी को हम blame कर रहे थे, अब खुद को छोड़ के, and you were not looking inside. So that is what I understand कि you are not taking ownership, responsibility for your situation and for your progress. So that is why I see. And mostly it is very, very common. People who have not gone through this personal awakening or self-awareness kind of a journey, mostly they tend to blame others. They tend to blame circumstances, but then they don't take the ownership of their actions. And that is where the problem arises. I firmly believe कि बाहर की चीजों को, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल सिचुएशन हो, उसको आप एक पॉइंट तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट इफ समथिंग हैज टू चेंज, द चेंज हैज टू बिगिन विद यू. सो एज महात्मा गांधी हैज आल्सो सेड दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. So that is how I look at it, and I am a firm believer, if you want real transformation, which is possible. लोग समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हो नहीं सकता. I firmly believe, because I have experienced it for myself, and then of course students like you who have experienced this journey. So I think it's all about shifting your focus. So transformation requires you to focus on who you want to be, not on who you already are, right? एग्जैक्टली, So I'm sure you would agree with this. Just for the 100%। benefit of all, I would just repeat this quote once again. Transformation requires you to focus on who you want to be, not on who you already are. Because that is very, very critical. Viewers, if you are watching this video, I would like you to share your views in the comment section. What do you feel about this? What I just said, or what Nikhil also mentioned about his journey. What do you think about it? Do you agree? Do you don't agree? What are your views? And if you have not subscribed, please subscribe it once again. So moving on, Nikhil, this is what you had gone through. This is how it helped you in overcoming. That's what I see. This program help you. So Nikhil, if I have to ask you कि कुछ आपके अगर मेजर ब्रेक थ्रूज रहे हो इस जर्नी में, apart from the inner transformation what you mentioned about या mindset shift, कोई tangible breakthroughs which you can really see for yourself या किसी और ने नोटिस किया हो, तो आप शेयर करना चाहोगे? जी बिल्कुल। बहुत सारे ब्रेकथ्रूज है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तो था ही, उसके अलावा कि मेरे को ये पता लग गया कि टू स्टे पॉजिटिव, जैसा आपने सिखाया, सबसे पहले अपने आसपास के सर्कल को बेटर करने की जरूरत है। आई हैव स्टॉप
मैंने नेगेटिव लोगों को अपने से बिल्कुल दूर कर दिया है कि बिकॉज दे वर गिविंग नेगेटिविटी टू मी कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं मैं भी उनमें इन्वॉल्व हो गया था। हाँ, सही कह रहे हैं, ये नहीं। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लिया। अब मैं बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव लोगों के साथ डील करता हूँ, Hmm. और अब मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है, Okay. जो मेरा सबसे बड़ा इशू था कि मेरा छोटा बेबी है, मेरे को ऑफिस भी जाना है, तो मैं कैसे ऑफिस पर्सनल लाइफ के बीच में अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है। अब मेरे को मेरा पूरा रूटीन सेट है कि मेरे को कैसे काम करना है। इनफैक्ट ऑफिस में भी कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जहाँ पे हम वर्क कर नहीं करते हैं, गॉसिप में टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैंने वो चीज़ें बंद कर दी है, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज हो गया कि वो एक्चुअली वो यूजफुल नहीं था। Right. मतलब अगर वो नहीं भी करूंगा मैं तो भी मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इट वॉज जस्ट टाइम वेस्ट फॉर मी। तो मैंने उस टाइम वेस्ट को एक अच्छे चीज में कन्वर्ट कर लिया, जो मेरे बेटरमेंट के लिए होता है। फ्री फ्री टाइम में, लंच टाइम में, जो भी ऐसे टाइम्स होता है जहाँ पे हम गॉसिप करते हैं, तो मैंने वो सब बंद करके मैंने बिल्कुल अपने पे काम करना चालू कर दिया है। मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपकी दोनों दोनों बुक, इनफैक्ट दूसरी बुक मुझे ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। आई वॉज मैं बुक बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे अंदर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आज तक लाइफ में एक भी बुक नहीं पढ़ी है। uh, मतलब your hacking and your focus is the only two books I have read in my life. Oh, मैंने आज तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, बट वो मेरे साथ क्या है कि आई लव स्टोरीज। right. आपकी बुक की सबसे अच्छी बात ये कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज, तो Right. वो बहुत फैसिनेट, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि आपने किसी भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई लव दैट। Hmm. उससे वो चीजें और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाती है, रादर देन एक स्टेटमेंट आपने पूरा उसको एक्सप्लेन किया, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। और वही सेम आपने अपनी कोचिंग में भी किया कि आपने किसी भी बात को डायरेक्टली नहीं बताया, आपने हमको वो करने बोला, बट इट वाज अ साइंटिफिक वे। आप चाहते तो मेरे को डायरेक्टली बोल सकते थे कि दिस शुड बी डन, बट यू Hmm. नेवर डिड दैट। Hmm. आपने मेरे को बोला कि यू डिड दैट, आप पॉइंट आउट करो, आप चीजों को हाईलाइट करो, एंड यू समराइज, एंड इट वाज रियली इफेक्टिव। तो समराइज करते करते आई रियलाइज कि आप मेरे को क्या बताना चाहते हैं, या व्हाट डू यू वांट टू टीच मी, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग कि योर गाइडिंग एक्चुअली गाइडिंग यू, एक्चुअली शोइंग यू कि यू नो दैट यू जस्ट नीड टू फाइंड दिस। मतलब आपने बहुत बहुत हेल्प किया। आपने कभी ये नहीं बोला कि मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। आपने बोला तुमको पता है, यू नो दैट, यू जस्ट नीड टू क्लियर योरसेल्फ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। Fantastic, fantastic. So Nikhil, अगर मेरे को jot down करना हो तीन चार major breakthroughs, what I hear you saying in reverse order. You started utilizing your team more time more effectively. तो पहले जो टाइम आप वेस्ट किया करते थे जनरल चिट चैट और यूजलेस गॉसिपिंग में, उसकी जगह आप अपना वर्क बेटर ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो घर पे यू डेवलप द न्यू हैबिट विच इज स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि यू स्टार्टेड योर रीडिंग जर्नी विद बोथ ऑफ माय बुक्स विच इज ऑसम। तो लाइफ में आपने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, अभी आप सेल्फ हेल्प सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगे हो। कम टाइम आप अभी वेस्ट करते हो इन डूइंग अदर स्टफ, जो यूजलेस चीजें आप करते थे वो अभी नहीं करते हो। दैट इज व्हाट आई हियर यू सेइंग। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग व्हिच यू सेड वाज यू स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप, एक माइंडसेट शिफ्ट हो गया। नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, नाउ योर productivity and time management skills have also improved. That is what I hear. Awesome. So it's more awareness, more mindset shift, and that is how I think things are working for you, and you are on a path for progress. Fantastic. ग्रुप बना लिया है Okay. कि द पीपल आर द राइट पीपल एंड नीड टू से दिस। Yes. इसके अलावा मैंने सबसे बेस्ट चीज ये हुई है, मैंने अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया है, जो कि Right. मेरी बहुत ज्यादा मैच हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था। मैंने इनको अच्छे से बैलेंस करना सीख लिया है कि Okay. मतलब जो हैक बताए, जो टेक्निक्स बताए, मैं उसको यूज करके अपने माइंड को मैं वैसे ही रख रहा हूँ कि मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना हो, क्योंकि वो मिक्स होने से मेरा दोनों तरफ खराब हो रहा था। तो Oh, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इसको कैसे बैलेंस रखना है। awesome.
So Nikhil, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. It was an awesome experience talking to you and knowing about your journey, and I'm sure viewers who are going to watch this video later on will also have this some similar kind of inspiration, and they are also going to live it. Now, the last question before we sign off: what do you want to say to the people who don't take action, या जिनको लगता है कि they can't go through this kind of a self development program या coaching में नहीं जाना चाहते because एक्सक्यूजेस रहते हैं कि टाइम नहीं है, मनी नहीं है, तो उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहोगे, एक शॉर्ट मैसेज? डेफिनेटली अगर मैं अपने आप को उनकी जगह पे रखूं जो मैं पहले था, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही था. मेरे पास नो बोलने के लिए आपके पास बहुत बहुत सारे रीजन होते हैं. टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ऑफिस का काम है, घर आओ तो घर को बस आपके पास ना बोलने के लिए बहुत रास्ते हैं. हाँ बोलने के लिए सिर्फ हाँ चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए. और जिस दिन वो येस आ गया, आप सब कुछ अचीव कर लोगे. मतलब आई वुड सजेस्ट कि हर लाइफ में हर आदमी को एक गाइड चाहिए, एक कोच चाहिए जो आपको करेक्ट पाथ दिखाए. आज अगर मैं अपने चाइल्डहुड की भी बात करूँ, हम अपने फादर मदर को देख के एक रास्ता निकालते हैं, अपने ब्रदर्स को सिस्टर्स को देख के स्टडीज में आगे बढ़ते हैं. वैसे ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एवरीबडी नीड्स अ गाइड. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि विच इज द राइट पाथ, आप नहीं जा सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते. एब्सोल्युटली. सचिन को भी कोच चाहिए था, हर आदमी को कोच चाहिए. बिना कोच के आप कुछ नहीं कर सकते. और इसमें कोई ये नहीं है ना, तो अंडर लेस कॉन्फिडेंट वाली बात है ना ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है कि मेरे को सब आता है, मैं खुद ही कर लूंगा. और ना ये बात है कि वो हिचकिचाहट है कि मैं ये अप्रोच नहीं कर सकता. बिल्कुल कीजिए, ये बेस्ट है. वो चीज है लाइक अ डॉक्टर जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है. तो मेरा सजेशन सबको यही रहेगा कि गो फॉर इट. एक ट्राई जरूर देना लाइफ में, एक बार इस चीज को जरूर ट्राई करना. यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स और अपने सारे प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर जाओगे. जितने भी हर्डल्स है जो आपने खुद ने क्रिएट किया अपने माइंड में, वो सारे ओवरकम होंगे. एब्सोल्युटली राइटली सेड. सो टाइम बोले या मनी बोले, तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स निखिल इट इज इन आवर हेड ओनली. एंड अगर इफ देयर इज सम इमरजेंसी वी आर ऑलवेज एबल टू अरेंज टाइम फॉर आवरसेल्फ, and we are also able to find money. That reminds me of a beautiful quote by Jim Rohn. So Jim Rohn was an American motivational speaker, and he was into this coaching and mentoring world. So he said one beautiful thing: work harder on yourself. Yeah, that is the right quote. So work harder on yourself than you do in your job. हम लोग मोस्टली जॉब में और अपने काम में तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाते हैं, बट वी डू रिपीटेडली सेम थिंग. उसकी जगह अगर हम अपने ऊपर ही उतना ज्यादा काम कर लें, so I think results would be faster. So it is something like, how much time you are spending in sharpening your saw and then going for a cut, and against that you are just cutting, and you are not sharpening the saw. So that is how I see it, and that is how coaching and mentoring help. Right. So Nikhil, it was awesome talking to you and going through this journey, and thank you very much for all the kind words and the appreciation which you mentioned about me, the books or the program. And I see it coming more from your heart, and that is how I look at the things. Fantastic, and I wish you all the best in your journey ahead. Keep progressing, keep shining. Since you have recently finished this particular program and we are still connected, I look forward to some amazing news from your side. And once that happens, we would like to connect once again, and we will have a second round of session with you at that point of time also. So, okay. So I would like to add. Yep. Something I would like to add. I will always be in touch with you. Sure. Whether I'm having a coaching sessions with you or not, I will always be in touch with you, and I will look forward to meet you as and when I can. Thank you. So thank you very much for being my coach. It was a blessing for me that I got a coach like you. Thank you very much. Thank you very much for guiding me. Awesome, Nikhil. Awesome. Thanks and pleasure interacting you. So before we sign off, so viewers, do subscribe, press the bell icon, and I will see you soon. Till then, take care, bye bye, and stay connected. Thanks. Bye.